अगर आप ये कहते हैं कि आई और वी के साथ शैल आता है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, अ लॉट ऑफ फ्रेजेस, अ लॉट ऑफ idioms, proverbs and many more things where shall can be used with third person of the subject as well. I have seen shall being used with you, he, she, it as well. Then where is your rule? Where is your logic that we have to use shall with I and we? No, that's not the case. अगर ये नहीं है तो एक proverbs आपने पक्का सुना होगा, और proverbs ऐसे हैं, जो आप बोओगे वही तो आप काटोगे, जैसा आप करोगे वैसे ही तो पाओगे. So in English it is said, as you sow, so shall you reap. I repeat one more time, as you sow, so shall you reap. यहाँ पे सो जो मैं बोल रहा हूँ, सो का मतलब है बोने से. So as you sow, जैसा आप बोगे, so shall you reap. तो आपने देखा shall का यूज यहाँ पे यू के साथ करा गया. फिर रूल कहाँ गया आपका, जो आई और वी के साथ हमें पढ़ाया गया था, रटवाया गया था एक्चुअली यार, कि हमें यूज करना है आई और वी के साथ शैल. लेट मी टेक यू थ्रू अनदर एग्जांपल एज वेल. So whatever the term and condition is assigned to you or given to you while applying for a loan or anything like doing transaction or doing something on online mode, जब भी आप ऑनलाइन पे कोई चीज़ फॉर्म वगैरह भरते हैं, then you must go to the term and condition. And it's very sad that none of us reads term and condition carefully, so you must guys care it carefully. तो वहाँ पे एवरी इन्फॉर्मेशन इज गिवन विद द हेल्प ऑफ शैल एंड इवन इट इज डेडिकेटेड टू यू. वो हमेशा यू को कहा जाता है, बिकॉज सेकंड पर्सन आगे वाला होता है और आगे वाले को टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया जाता है कि यू शैल बी लायबल, यू शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. Then where is the rule that we had to use shall with I or we only? No, that's not the case. And let me take you another example as well. So perfect class, once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar and I welcome you all to my YouTube channel English with Aman. So आज की क्लास में you are going to learn the use of future indefinite tense. And before teaching this topic, let me mark you some of the important information that I have already covered. Present tense, whether it's all parts. If you talk about present indefinite tense, present continuous, present perfect, or the last topic of it, present perfect continuous tense as well. Thereafter I made a separate video on all parts of past tense as well. If you talk about past indefinite tense, past continuous, past perfect, or past perfect continuous tense as well. But in today's class, in today's particular video, you are going to learn one of the most interesting, or like I would say, simplest topic so far in our day-to-day conversation, because this is the tense which is often or which is commonly used in our day-to-day conversation. And you will rarely, not rarely I would say, you will find a lot of people speaking the sentences, using the statements, using future indefinite tense many times. So this is the topic which is going to help you a lot just to talk about future tense as well. So without further ado, let's get the ball rolling. और एक चीज़ मैं आपको बार बार बता दूँ, आई नेवर टीच इंग्लिश और आई डू नॉट टीच एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन और एनी अदर लैंग्वेज आउट देयर, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट सपोज टू बी लर्न और टॉट विद द हेल्प ऑफ एनी अदर लैंग्वेज. इट इज सपोज टू बी लर्न और टॉट विद द हेल्प ऑफ ऑन इट्स रूल और ऑन इट्स रूल एंड रेगुलेशन. सो मेक श्योर डू नॉट लर्न एनीथिंग, डू नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश. So stick to English, learn everything in English only, and try to have the exact meaning of every word, every sentence, every topic and everything, especially in English. So without further ado, let's get the ball rolling. Alright, so these are the rules or the structures which can be used just to make the sentence of positive, negative, interrogative plus negative and WH words as well and everything. Before looking at all of these, let me take you through the use of future indefinite tense first of all. And if we are done with the use of future indefinite tense, then we'll move on to the structures or the examples as well. Alright, so बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. जैसे कि मैंने बार बार बोला है कि यू डू नॉट नीड टू केयर अबाउट द हिंदी सेंटेंसेस दैट वेयर योर सेंटेंस एंड इन. इफ अ सेंटेंस एंड्स इन गा, गी और एनी हिंदी वर्ड्स आउट देयर, डू नॉट रिलाई ऑन एनी हिंदी वर्ड्स आउट देयर और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज ऑफ योर्स. ऑलवेज फोकस ऑन इट्स ऑन मीनिंग, प्रिसाइज मीनिंग. ऑलराइट, सो बढ़ते हैं. So talking about the action that any of us will do in the future time.
So basically we are going to talk about the action in future indifferent tense that any of us, like any of us, हम में से कोई और any non-living thing can also like non-living thing will also do some sort of actions as well, like with the help of it, that, this. So these all are non-living things and they are also used to talk about, they are also used as a subject, and being subject it can definitely take a verb and object as well to frame a sentence. So basically मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि talking about the action that any of us will do in the future time, that's where future indefinite tense comes. यानी कि future indefinite tense का यूज़ आप कब करेंगे? When we talk about the action or talking about the action that any of us, हम में से कोई ना कोई तो होगा ना जो एक्शन को परफॉर्म करेगा. So whoever is out there, whoever is going to perform or will do action in the future time. So talking about the action that any of us or whoever is going to perform an action, but that action should be done in the future time only, right? So यही यहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि talking about the action that any of us will do in the future time, वहाँ पे आपको future indefinite tense का यूज़ करना है. अब इसके रूल की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी से फटाक से, then we'll move on to the examples as well. पॉजिटिव में सेंटेंस आपको यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है एंड देन विल लगाना है विद सर. वेयर इज सेल सर? सॉरी सर सेल तो आपने इसमें लिखा है नहीं. फ्यूचर में तो हमें ये सेल का यूज सिखाया गया था, विल का यूज सिखाया गया था. Okay, so if you have learned this tense, I am damn sure you must have learned this tense many times. So how many of you can answer my question that I and we actually that are always followed shall, because this is the thing which is always taught in our school actually, which is taught to us in our school, tuition or anywhere out there wherever we learn English. तो हम जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं wherever we learn English, so we are always taught you got to use shall with I and we, कि आपको shall का यूज़ करना है और I और we के साथ. खैर अभी मैंने यहाँ पे आपका सेल कहीं लिखा नहीं है और वो जो स्टेटमेंट आपने रटा हुआ है कि आई और वी के साथ सेल आता है, दैट इज नॉट अ प्रिसाइज आंसर, दैट इज नॉट एन एक्यूरेट आंसर. But yes, in the upcoming videos, if you really need a precise use, if you really need a good video on this particular topic, then please do let me know in the comment section below. I'll definitely make a separate and interesting or valuable video on this video, because whatever the information which has been given to us about this test is not remarkable, I would say, is not enough. Because हमें क्या पढ़ाया गया? What we have been taught that use shall with I or we. Yeah, is that the case? Then let me give an example. अगर आप ये कहते हैं कि I और we के साथ shall आता है, but I have seen a lot of sentences, a lot of phrases, a lot of idioms, proverbs and many more things where shall can be used with third person of the subject as well. I have seen shall being used with you, he, she, it as well. Then where is your rule? Where is your logic that we have to use shall with I and we? No, that's not the case. अगर ये नहीं है तो एक प्रोवर्ब्स आपने पक्का सुना होगा, और प्रोवर्ब्स ऐसे हैं, जो आप बोओगे वही तो आप काटोगे, जैसा आप करोगे वैसे ही तो पाओगे. So in English it is said as you sow so shall you reap. I repeat one more time, as you sow so shall you reap. यहाँ पे सो जो मैं बोल रहा हूँ, सो का मतलब है बोने से. So as you sow, जैसा आप बोगे, so shall you reap. तो आपने देखा shall का यूज यहाँ पे यू के साथ करा गया. फिर रूल कहाँ गया आपका, जो आई और वी के साथ हमें पढ़ाया गया था, रटवाया गया था एक्चुअली यार, कि हमें यूज करना है आई और वी के साथ शैल. लेट मी टेक यू थ्रू अनदर एग्जांपल एज वेल. सो वट एवर द टर्म एंड कंडीशन इज असाइन टू यू और गिवन टू यू while applying for a loan or anything like doing transaction or doing something on online mode. जब भी आप ऑनलाइन पे कोई चीज़ फॉर्म वगैरह भरते हैं, then you must go to the term and condition. And it's very sad that none of us reads term and condition carefully, so you must guys care it carefully. तो वहाँ पे every information is given with the help of shall and even it is dedicated to you. वो हमेशा you को कहा जाता है, because second person आगे वाला होता है और आगे वाले को term and condition के बारे में बताया जाता है कि you shall be liable, you shall be responsible for this. Then where is the rule that we had to use shall with I or we only? No, that's not the case. And let me take you another example as well. You must have heard a motivational line, and the line is very simple. I can and I will. The sentence is I can and I will. तो यहाँ पे इन्होंने I के साथ will use क्यों करा भाई?
यहाँ तो हमारे साथ जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग तो आई के साथ सेल आना चाहिए था, बट दे हैव यूज्ड व्हाट, आई कैन एंड आई विल. एनीवेज दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर टॉपिक टुडे. I'll definitely make a separate video on the difference between shall and will, where shall can be used and where will can be used. So make sure wait for this video, and if you really need a separate video on this topic, do let me know in the comment section below. As of now we are going to focus only on this topic right now, और separate video बहुत जल्दी आपके लिए बनाऊंगा. Please stay connected and will be you'll be getting many more things, much more I would say. You'll be getting a lot of things from my channel. Thank you. So let's go to the example, rules. First of all, you got to use shall and with all the subjects. If a subject is singular, plural, he, she, it, this, that, these, those, or name of anything, or name of anything, you got to mark will and then first form of the verb and then object. Fine. Positive में again you have to use subject and then will, not verb की first form then object. Interrogative, I think interrogative हाँ, सबसे पहले will then subject, verb की first form then object. Interrogative plus negative, will, subject, not, verb की first form then object. अच्छा, sometimes we need to talk about the sentences based on interrogative along with WH word. So for that you can simply use any WH word out there at the beginning of the sentences. At the beginning of the sentences you got to mark WH word. It could be why, what, where, who, whom, whose, which, or any WH word out there. And then you got to mark interrogative structure, that is this, right? और अगर if you need to talk about interrogative plus negative and along with that you want to use WH word as well, so you can do that as well. Simply use WH word again, any WH word out there, and then use the structure of interrogative plus negative, and that's how you have your sentence structure or sentence as well. So I think we are done with the structures of future indefinite tense. Now let me mark you some of the contraction forms, because in spoken English no one is going to speak the entire sentence basically. Like I am not going to speak like that. I will call you, she will help me, they will take class from me. Though they can speak English, though we can make sentence like this, but in spoken English you will definitely find a lot of people using the contraction form. What do I mean by contraction form? मतलब कि shortcut. Will के साथ तो बहुत shortcut चलता है. So that's what I want you to look at here. यहाँ पे आप नजर डालेंगे कि जो shortcut होता है I plus will बन जाता है I plus will becomes I. You plus will becomes will. I'll will. Or they plus will, del, not dil but del. It is rather pronounced del. Fine. And C plus will becomes sil. C plus will becomes sil. V plus will, right? V plus will. V plus will, fine. Or he plus will, hill. He plus will, hill. And similarly, it plus will becomes it'll. So I repeat all of them one by one. I will, they'll, he'll, she'll, it'll, will, and और सारे मैंने ऑलरेडी आपको कवर कर दिए. तो स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं, तो आप इस कॉन्ट्रैक्शन का ध्यान रखें, इस शॉर्टकट का ध्यान रखें. अब हम चलते एग्जाम्पल की तरफ. नाउ थिंक ऑफ द एक्टिविटीज दैट एनी ऑफ यू और एनी ऑफ अस और हुएवर इज गोइंग टू परफॉर्म दैट एक्शन इन द फ्यूचर टाइम. थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन. कोई एक्शन सोचिए दैट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर टाइम, एंड दैट्स वेयर यू गॉट टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. लेट्स गो. So let's suppose I am thinking of doing a conversation with you. I am thinking of doing a conversation, but not right now, but in the future time. Future time में मैं आपसे एक conversation करना चाहता हूँ. So same thing can be translated, or this statement can be translated with the help of future indefinite tense. So what I'll say, I'll simply say, and listen to me, hear me out carefully. What I have just said. Here, what I have just said, I'll do something. So what I'll do? Repeat. I'll. कॉन्ट्रैक्शन दिखाना चाहता हूँ. तो फ्यूचर में मतलब कि लेट्स सपोज मुझे बोलना पड़े कल मैं आपसे बात करूँगा, कल मैं आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करूँगा. सो हु विल डू अ कॉन्वर्सेशन विद यू? ऑफ कोर्स आई. सो आई विल से I will do a conversation with
due tomorrow. And one more thing guys that you need to remember, it's not compulsory to use time all the time. ये compulsory नहीं कि आप time का use करो. We will automatically understand that you're talking about future time with the help of will. This is a helping verb that sometimes help us to understand what time you are talking about, what time we are talking about. Fine. So आप use करें future time expression का या ना करें, we already understand it. Fine. So I will do a conversation with you tomorrow. And same thing can be said with the help of contraction as well. Shortcut में क्या बोलूँगा? I'll do a conversation with you. I'll do a conversation with you. Right? Negative बनाते हैं इसी sentence का. तो मैं आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं करूंगा कल. सो व्हाट विल आई से? आई विल नॉट डू अ कॉन्वर्सेशन विद यू टुमारो. राइट. तो कल मैं आपसे कॉन्वर्सेशन नहीं करूंगा. और अगर मुझे इसी बात को इंट्रोगेटिव में बोलना पड़े कि क्या मैं आपसे कल कॉन्वर्सेशन करूंगा, सो व्हाट विल आई से? Will I do a conversation with you tomorrow? And our sentence is, will I do a conversation with you tomorrow? Last, interrogative plus negative. कि क्या मैं कल आपसे conversation नहीं करूँगा? Then how would I say? I would simply say, will I not do a conversation? Will I not do a conversation with you tomorrow? कि क्या मैं आपसे कल बातें या कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगा. और अगर इसी में अगर WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव या WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊँ तो उसको भी देख लेते हैं. तो मैं आपसे कल कॉन्वर्सेशन क्यों करूँगा भाई? व्हाट्स माई बेनिफिट? अगर बोलना पड़े लेट्स सपोज कि मैं आपसे कल क्यों कॉन्वर्सेशन करूँगा, सो आई विल सिंपली से वाई will I do a conversation with you tomorrow? So our sentence is, why will I do a conversation with you tomorrow? Last वाला interrogative plus negative कि मैं आपसे कल conversation करूँगा क्यों नहीं भाई? Of course करूँगा. I'll definitely do a conversation with you. But this is just a question कि मैं आपसे क्यों नहीं करूँगा कॉन्वर्सेशन भाई कल. सो आई विल सिंपली से वाई विल आई नॉट डू अ कॉन्वर्सेशन विद यू tomorrow. So our sentence is, why will I not do a conversation with you tomorrow? तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 6 तरह के सेंटेंस, चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव. मैंने आपको यूज भी समझा दिया, स्ट्रक्चर्स भी दिखा दिया, एंड आई ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्ट्रक्चर्स एज वेल. आई मीन कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स एज वेल. जो ये कॉन्ट्रैक्शन है इसका याद रखिएगा. नाउ लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल को लेते हैं. Let's suppose somebody is thinking of joining my class, right? But right now he or she is not interested in taking class right now. अभी वो interested नहीं है, but they are planning to take my class like the day after tomorrow or in the next month or any other days as well or any other months as well. So what will I say about my classes? Basically जैसे मुझे बोलना पड़े कि वे मेरा क्लास कल से लेंगे. Now वे, अब मैं यहाँ पे group of the people की बात कर रहा हूँ, so I will use they. They will take my class from the next month. They will take my class from next month. ये तो हो गया पूरा सेंटेंस. शॉर्टकट में बोलना पड़े तो they will becomes them. So they will take my class from next month, next week ऐसे. वो अगले महीने से मेरे क्लास नहीं लेंगे यार. Let's suppose if I got to speak sentence like this. So they want, will not का contraction of want हो जाता है एक नया चीज. जो आपका will है प्लस not, इसका शॉर्टकट आपका बन जाता है वॉन्ट. और आपने पक्का इस वर्ड को देखा होगा आपके व्हाट्सएप के दुनिया में. और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस मोड का आप चैटिंग का यूज करते हो ग्रीन वाला जिसका व्हाट्सएप बोलते हैं, दैट्स नॉट व्हाट्सएप, दैट इज एक्चुअली व्हाट्सएप.
But I have seen a lot of people, I have heard a lot of people saying, भाई WhatsApp कर दियो, I'll send you, I'll talk to you on WhatsApp. My dear, that's not WhatsApp. WhatsApp doesn't mean the app which you use to have a conversation and to have a chat to each other. ना, वो WhatsApp है. So you would rather say, send me and we'll talk to each other on WhatsApp. Do it, send it to me on WhatsApp, not on WhatsApp. ध्यान रखिएगा. तो व्हाट्सएप पे दुनिया में आपको ये वांट बहुत आया होगा, तो इसको वांट बोलते हैं नेगेटिव में. वो मेरे क्लास नहीं लेंगे यार, दे वांट टेक मी क्लास फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ऐसे तुम अब से मुझसे बात नहीं करोगे, तो यू विल नॉट टॉक टू मी फ्रॉम नाउ. राइट, शॉर्टकट में यू विल नॉट टॉक टू मी, यू विल नॉट, या फिर यू वांट टॉक टू मी फ्रॉम नाउ. अब तुमसे बात, अगर अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे. कुछ और एग्जाम्पल, हम आपकी बातें नहीं मानेंगे, अब हम आपकी बातें नहीं मानेंगे. नाउ वी वॉन्ट लिसन टू यू, नाउ वी वॉन्ट ओबे यू, हम आपकी बातें अब नहीं मानेंगे. अच्छा, मुझे इट से बनाना पड़े तो, ही या सी से बनाना पड़े तो, अब वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, अब वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा. नाउ दैट बॉय और ही विल नॉट प्ले विद यू. शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे, he'll not play with you, he'll not play with you. ये भी शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट के लिए बढ़िया से वॉन्ट का यूज करें. he won't play with you, he won't play with you, वो आपके साथ नहीं खेलेगा. ठीक है, he will not play with you. Let's suppose there is a girl and I'm talking about her, कि भैया वो तेरे साथ नहीं पढ़ेगी, तो सिंपली कह सकते हैं she'll not study with you, she won't study with you, she won't study with you. अब वो आपके साथ नहीं पढ़ेगी. Now you can leave the class. Sir, it's raining outside. No dear, अब बारिश नहीं होगी. अगर हमें बोलना पड़े अब बारिश नहीं होगी, so you can simply say it will not rain now, it will not rain now. And the contraction way, how would you say, it won't rain now, it won't rain now. So I hope you must have understood the use of future indefinite tense, but you still have any doubt, any query regarding this tense or any tense, I would say anything in English, do let me know in the comment section below so that I can work on it and I'll definitely help you out in making you understand the concept of English, right? So I'm like winding off this video. Before winding off this video, let me give you a sentence that you need to drop down in the comment section below in English and I'll check it out. Right? So your sentence for you is, अब से आपसे कोई बात नहीं करेगा, अब से आपसे कोई बात नहीं करेगा. आपका हिंदी सेंटेंस है, अब से आपसे कोई बात नहीं करेगा. So this is your sentence that you need to translate into English and drop down in the comment section below. Would love to check it out and share whether you have answered correctly or not. Meanwhile, signing off, this is Aman Kumar. Thank you so much guys. Thank you so much.